Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our channel MCQs platform. As you know, we have started this series of 101 Golden Rules of English Grammar. Students who are going to appear in PMS, PCS, CSS and other one paper based exams, they can watch this series and they can secure their marks in English. Today we have brought rule number 12 for you. If you haven't watched previous rules, then you may click I symbol in the right corner of this video. Before going to start, I would like to request you to subscribe our channel and press the bell icon so that you may get notification about all 101 golden rules of English grammar. So let us move to learn rule number 12 for today. In English grammar, one of always takes a plural noun after it. अब देखें इंग्लिश ग्रामर में जब भी एक्सप्रेशन वन ऑफ इस्तेमाल होगा तो उसके बाद जो भी नाउन इस्तेमाल होगा उसमें वो प्लूरल होगा, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल ये है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ। अब देखिए वन ऑफ इस्तेमाल हो गया तो उसके बाद जो नाउन होगा उसको हम क्या देंगे, प्लूरल देंगे। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ। अब दूसरा एक क्वेश्चन आपके लिए हमने रखा हुआ है जिसको आप एज अ क्वेश्चन समझें और इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। नो वन विल डिनाई दैट अलीना इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड डैश इन आवर ऑफिस। ए गर्ल, बी गर्ल्स, सी बोथ आर राइट, डी नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का रूल नंबर 12 समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रूल नंबर 13 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।